I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you try and think. नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी आपको बता दूं आज हमारा जो एपिसोड है वो 10वां एपिसोड है। और आज जो हमारे गेस्ट आने वाले उन्होंने कारगिल युद्ध की लड़ाई लड़ी है 1999 की, और कई सारे ऑपरेशनों में उन्होंने भाग लिया है। और आपको बता दें और आर्मी में वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको बचपन से ही शौक था आर्मी में जाने के लिए कि आप और भी कुछ करना चाहते थे? Thank you very much, sir. When I was studying in class 10th standard, that time in my district, one big army exercise was held. That time I saw military officers and junior officers and jawans during that exercise. I was studying in 10th class. Then one officer asked me at my field. At that time I was on my tubewell and I was in my field with my father. So one army major asked me, what is your name? So I was not very fluent in English that time. So मैंने हिंदी में जवाब दिया कि सर मेरा नाम मदन मोहन है। अच्छा मदन मोहन, आपके पापा कहाँ हैं? मैंने कहा मेरे पापा तो अभी घर पे खाना खाने गए हैं। तो हमारी आर्मी की एक्सरसाइज आई है, तो हम आपके ट्यूबवेल के पास एक टेंट लगाना चाहते हैं। यहाँ पानी की फैसिलिटी है, आपका ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो क्या मैं यहाँ पे टेंट की व्यवस्था और एक ऑफिसर कैंप लगा सकता हूँ? मैंने तुरंत बिना पूछे ये निर्णय लिया कि आप बिल्कुल हमारी देश की सेना है, आप हमारे ट्यूबवेल पे आप अपना कैंप खोल सकते हैं और अपना कैंप लगा सकते हैं। तो वो डिसीजन जो मैंने लिया, मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि इस प्रकार की हम एक अपने आप के भविष्य को तैयार करने जा रहे हैं कि हम आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आर्मी को ज्वाइन करने से मेरी पहले की घटना घटी। दैट टाइम आई टुक माई डिसीजन दैट आई शैल ज्वाइन माई आर्मी इन वट एवर ग्रुप, बट लेटर आई ज्वाइन माई आर्मी एजुकेशनल कोर। ठीक, तो मुझे आप बताइए सर कि आर्मी वाले हर परिस्थिति में मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब आप इतनी ठंड देखें, आप सुपर के बैठे हुए हो, जब आप आर्मी के दौरान ड्यूटी कर रहे थे जब माइनस में टेम्परेचर होता है, तो हाउ कैन यू मैनेज? हाँ सर, एक्चुअली क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। मैं एक सिस्टमेटिकल डिसिप्लिन थोड़ा हम लोगों को बताया जाता है, बैठना उठना, वो हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट। सो उस सिस्टम में मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ड्यूरिंग आवर माइनस टेम्परेचर एरियाज, व्हेन आई वाज इन सिक्किम, आई सर्व्ड इन सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, दैट इज चाइना बॉर्डर। हमारे शरीर में और हमारे माइंड में इतना जुनून होता था कि वी नेवर थॉट अबाउट दिस कोल्ड एंड ऑल। इवन दैट टाइम देयर वाज द माइनस टेम्परेचर, वेरी सीवियर कोल्ड। हम जब बाहर पानी पीते पीते हमारी बोतल में पानी जम जाया करता था, नॉर्थ सिक्किम एरिया। सो उस टाइम हम लोगों को, और अभी भी नहीं है कि कौन क्या सर्दी गर्मी से, वी आर नॉट बॉदर अबाउट दैट। ठीक है, तो सर आप कितने ड्यूरेशन में आप आर्मी में रहे और उस दौरान आपने कौन कौन से ऑपरेशन में हिस्सा लिया और कौन से आपने युद्ध में लड़ाई लड़ी? Right, sir. So first of all, when I joined my army educational corps and tenure of the services, as per the armed forces, I was posted in many places, and total I completed my 16 years in army education corps. Which year? From December 1984 to 30 September 2000. 2000. During these services, I got very good chance and golden chance to participate in Operation Rakshak. It was running. It is running, or just now it is going on. Operation Rakshak in District Doda in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir
from 1990 and 85, this is insurgency area, and district Doda was one of these districts. It is very sensitive or very insurgency area. So I got the chance to serve there in district Doda the Operation Rakshak. कोई एक ऐसी कहानी जो आर्मी वालों की तो पूरी अलग ही कहानी होती है, जो सिविलियन अभी तक नहीं सुनी हो, वो कहानी आप मुझे बताएं। During my armed service, I can explain about myself. When I was May month and in 99, when I was in army, I got a message from the armed forces and headquarters that Operation Vijay has been declared by ex-Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee. अच्छा, He was a very, very energetic, and he was very great Prime Minister of India we have. So we got the message that Operation Vijay, Kargil war has been declared. So we got the chance also to participate in Kargil war. That time I was in under Operation Rakshak. But this is the one of the good story I want to tell from you, that this was a very good story. दो सिविलियन लोग को पता नहीं है, but I found it कि हमने ऑपरेशन विजय कारगिल में बड़ी ब्रेवरी से हमने अपनी ड्यूटी को निभाया, और I also have been awarded ऑपरेशन विजय मेडल इन कारगिल वॉर 1999. मेरा एक सिंपल सा आपके लिए क्वेश्चन है, ये जैसे कि हम भी कुछ कार्य करने के लिए जाते हैं, या फिर हम किसी युद्ध के लिए जाते हैं या किसी स्टडी के लिए जाते हैं, तो कारगिल युद्ध से पहले, कारगिल युद्ध के दौरान और कारगिल युद्ध के बाद में क्या स्थिति में आपके परिवर्तन आया? Because so far as this situation is concerned, our government is very alert and very active in this present phase. At that time, failure in the administration, but so far as the the moment, our present government is very, very active in this regard, in field of developing the educational, not only education system armed forces, but great weapons for armed forces, great weapons for Indian Air Forces, and very great warship for Indian Navy. So we have so many changes after Kargil war. मुझे एक आप मुझे बताएं कि ड्यूटी के दौरान आर्मी वालों के लिए कौन कौन सी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक सिविलियन ड्यूटी करता है, एक आर्मी वाला ड्यूटी करता है, तो वो ड्यूटी के बाद में सिविलियन क्या करता है कि आज मुझे बेटी के लिए ले जाना है, कि बेटे के लिए ले जाना है, कि मुझे दोस्त से मिलके जाना है। और आपके साथ आप जब ड्यूटी करते होंगे, ना तो वहाँ पे एयर टावर आता होगा, ना मोबाइल का टावर आता होगा, ना इंटरनेट कनेक्शन आता होगा, खाना खा रहे तो पता लगा किसी ने बम डाल दिया। तो कब आपको कभी याद आती है घर की, या फिर कैसे मैनेज कर पाते हो वैसे? Actually, in armed forces, we all are trained in such a way that we are always mentally and physically fit. So first of all, we are so much highly engaged with our armed forces system and strategy that we don't have the time. We don't have the time, and we are not spare to talk about and to see a very good civil engagement. Because through the army channel, we are so highly engaged that we don't have the time for these silly things. We are not willing to always engagement in our civil activity, because already we are engaged. But so far as our family members are concerned, so we already are trained in such a periodically movement. Whenever we were free, so we were listening the radio, फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम. So we enjoyed a lot whenever I was in a single, not with my wife, and with my no army quarter was given in some areas. So we enjoyed listening music, फौजियों के लिए कार्यक्रम के गाने, and reading and writing skills. That time, sir, we have a good always we are having a good system of education, good library in army. So we used to we used to read the books, and our duties, army duties, and as per army strategy, we were fully engaged, sir. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि जंग के दौरान आपकी मैच्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर युद्ध के दौरान आपके दिमाग में कुछ और अजीब व गरीब बातें चलती हैं, और उसके बाद में आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, घर वाले क्या सोचते होंगे? What I feel during war and during peace, our motto, our objectives are very clear cut, based on West Point leadership.
because West Point leadership is one of the leadership in the country, in the world, where the army generals, army strategies are followed. And so far as my personal view is concerned, we see armed forces life is one of the very energetic life, very disciplined life, and multidimensional, and nationalism always in our mind. So we don't think about these other, we don't have the time to think about these other things. तो आपने सर अभी तक कौन कौन से शहर घूमे हैं अपनी ड्यूरेशन में? अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जॉब होती है. दिस इज वेरी राइट वन. आई हैव बीन पोस्टेड इन मैनी आर्मी कैंट एरियाज, वेरी इन आर्मी मिलिट्री स्टेशंस, एंड सो फार एज आई हैव सीन मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कंट्री. अब तक को आपका जो सबसे सुंदर शहर जहां आपको लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे दोबारा वहां जाना चाहिए? इंडिया इज अ कंट्री with full lot of unity and multi-dimensional culture. All states, wherever I served in army, all cities were very beautiful in their atmosphere, in its atmosphere, in its climate. But so far as still your question is special about very good one city, I like most Darjeeling. अच्छा. Darjeeling, it is in West Bengal, it is a part of Eastern Bengal, but Darjeeling is quite good place where the people are good, and what I saw there, the people lived in a harmonious culture, and it is a very hilly spot, and not only a natural scene, but I like most Darjeeling. आर्मी युद्ध के दौरान किस तरह से काम करती है और सरकार का कितना हस्तक्षेप रहता है? No, there's no armed forces is never in touch, but whatever the command and control, or whatever the system is there in armed forces, we follow the rules and regulations. Because army is one of the best disciplined organization in the world. So we are men of disciplined culture, we are men of disciplined traditional, we are men of disciplined tradition, culture, and we are men of disciplined language. तो मुझे आप बताओ कि युद्ध के दौरान क्या स्ट्रेस या फिर आपका कोई पेनफुल या फिर कोई डिप्रेशन कुछ रहता है सरकार के थ्रू, प्रेशर रहता है? No sir, no, not at all. I was in Assam also when Rhino operation was done. Before that, before Rhino operation, I was in Assam. So army always fight bravely with insurgents, with terrorists, with militants. There is no any disturbance, there is no any we don't have any obstacle from other services. अच्छा, आपके लिए जो मौजूदा सरकार है, आर्मी के लिए अभी तक 10 सालों में क्या बेहतर किया है? सारे ग्रेट चेंजेस. हमारी देश की सेना में तीनों अंगों को, मैं तो कहता हूँ सभी देश की सेना के सभी अंगों को पिछले 10 साल में बहुत ही शानदार तरीके से सुसज्जित किया गया है. भारतीय सेना को बहुत बड़े अच्छे टैंक, बड़े बड़े वेपन्स हमारे लिए सेना को दिए गए हैं. हमारे एयरफोर्स में बहुत फाइटर फ्रांस से आए हुए हैं, F-16. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा राफेल आ गया. राफेल हमारे पास ऑलरेडी, राफेल को लेने से फ्रांस में हमारे पास सभी चाइना जैसी सुपर पावर और हमारे जो दुश्मन देश के दुश्मन हैं उन लोगों को ये बहुत बड़ी झटका लगा है कि आज हमारे पास भारतीय वायुसेना, हमारी भारतीय थल सेना और भारतीय जल सेना, तीनों सेना के अंग बहुत चुस्त और दुरुस्त के तरीके से आज हथियारों के साथ सुसज्जित हैं और अपनी ड्यूटी के साथ हम निभा रहे हैं. तो जो मौजूदा सरकार है, क्या आर्मी वालों के लिए या फिर जो भी तीनों आर्म फोर्सेज हैं, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इसके लिए अलग कुछ और प्लान कर रही है आगे के लिए? यूँ तो सभी सरकारें सभी अपनी देश की सेना को सुसज्जित करने का काम करती हैं, पर वर्तमान मौजूदा सरकार ये बहुत ही गंभीर है और खासकर सुरक्षा के संबंध में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है. वर्तमान सरकार का ये वेस्ट पॉइंट लीडरशिप ही नहीं, ये लीडरशिप एक ग्लोबल लीडरशिप होने जा रही है और हो गई है. आज हमारे पास ग्लोबल लीडरशिप माननीय प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो भी हमारे देश की गतिविधियां हो रही हैं बड़े आन बान शान के साथ चल रही हैं. तो फिर आप अग्निवीर योजना से सहमत है? Obviously, अग्निवीर इज वेरी गुड.
is a very good step taken by the government, because our government is planning to training maximum civilians. When maximum army training will be given to the people, like Israel, What is in Israel? Israel, every citizen of the Israel has to complete 5-year service in army. Then today, Israel government and Israel army is one of the best army in the country, in the world. Agniveer is obviously good. तो मुझे आप एक बात बताइए, एक तरफ एनसीसी का जो संगठन है, जो गठन किया गया है, जो सी सर्टिफिकेट होल्डर होता है एनडीए में, उसको एग्जाम नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट एसएसबी दे सकता है। तो क्या इसमें ऐसा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि 4 साल के लिए, जो जैसे कि 4 साल के लिए एनसीसी करते हैं, 4 साल के लिए अग्निवीर में भर्ती होते हैं, क्यों ना सी सर्टिफिकेट होल्डर डायरेक्ट उससे कुछ सवाल जवाब ना किया जाए, साइड से सर्टिफिकेट होल्डर देके और अग्निवीर योजना में, अग्निवीर में उसे शामिल किया जाए? क्या ऐसा होना चाहिए? Wonderfully, sir, I am agree with you. You are talking about NCC, National Cadet Corps. It is one of the Indian organization in the world, and National Cadet Corps of India. And your question is, NCC candidate already having the many facilities regarding joining the armed forces. But so far as simultaneously we can start for Agniveers, because Agniveer is also one of the main part of our defense forces. So naturally they must get chance to become an officer in army as per the strategy of our Indian government and defense ministry and our SSB. और आपका जो क्वेश्चन है कि अगर युद्ध के दौरान कोई शहीद हो जाता है तो सरकार उसके घर वालों को कौन कौन सी सुविधाएं देती है? क्या सरकार अगले 5 साल या उसके जो भी जीवन यापन करने के साधन है उसको देती है? Very front, our Indian government is a very alert in the welfare of the Indian soldiers who have given their sacrifice of life, their life for the country. And the present government not only taking care of the welfare of the martyred soldiers, but also giving them full facility, like their surviving family members, surviving wives, surviving children. So our defense ministry is taking care of very seriously. सर, आप मुझे ये बताइए कि आपने ड्यूटी के दौरान कोई 3 सबसे टॉप लेसन कौन से हैं जो आपको ऐसा लगता हो सबसे बेहतर ये होना चाहिए? मैंने अब तक जीवन में डिफेंस फोर्सेस में के दौरान और असैनिक लाइफ के दौरान मैंने ये सीखा और मैंने ये पाया कि सर्वप्रथम हमें अपने आप को अनुशासन में रखना चाहिए। पर्सनल डिसिप्लिन हमारा इतना अच्छा और शानदार होना चाहिए कि हमसे और लोग और हमारे नागरिक और हमारे सहपाठी, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी ये हमसे सीख पाएँ कि आपके जीवन में पर्सनल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैंने पाया कि हमारी लीडरशिप, हमारे बच्चे, हमारे आईआईटी के बच्चे, हमारे मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे, दे आर गोइंग अब्रॉड. दैट्स वेरी गुड, बिकॉज in our India the best organization are like IITs, like IIMs. So we are having a very good opportunity to reach our children at this stage and at this level. Likewise, I am reading, when I read the book of Jim Collins. अच्छा. Jim Collins, I read his book. Then what I came to know, that is in United States of America, the American students are getting training based on the West Point leadership in USA. Okay. Then why not our Indian student, and at higher level and school level, they must be given military education. Okay. They must be given a leadership lesson. Okay. Our syllabus, the lessons should be very enriched based on leadership also. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका में जो लीडरशिप मिलती है वो यहाँ के बच्चों को नहीं मिलती है? यहाँ के बच्चों को मिलती है, बट उनके बराबर हमारे एक लीडरशिप प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए। जिस प्रकार हमारे इंडिया के अंदर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आर्मी के ऑफिसर्स,
नेवी के ऑफिसर्स, जवान, एयरफोर्स के नेवी ऑफिसर्स को डेवलप और उनको चुनाव करते हैं, उसी प्रकार सिविलियन बच्चों के लिए और अन्य हमारे भारतीय बच्चों के लिए और ऐसी कुछ योजना बनाई जाएं जिससे हमारे देश के बच्चे को एक अच्छी लीडरशिप सिखाई जाए और नेशनलिज्म, हमारा राष्ट्रवाद की भाषा सिखाई जाए, राष्ट्रवाद के लेसन सिखाए जाएं और केवल हमें अपने भारत को कैसे आगे लाना है, हमको ऐसी शिक्षा भी डेवलप करने की जरूरत है। आपने प्रत्येक क्वेश्चन में एक शब्द बोला, डिसिप्लिन। आप देखते होंगे भारत में जो सिविलियन लोग हैं, मुझे पूछना चाहिए क्योंकि जब आप आर्म फोर्सेज में होते हो, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन होता है। जैसे कि मैंने एनसीसी की है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा गया मुझे। मैंने कई सारे कैंप किए, लेकिन जब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो अनडिसिप्लिन देखा जाता है सिविलियनों में और सिविल सोसाइटी में भी। करेक्ट। तो आप एकदम से डिसिप्लिन में आके डिसिप्लिन में रह रहे हो, जैसे ही आप अनडिसिप्लिन सेक्टर में आते हो तो आप क्या देखना चाहते हो और आपके मुंह से क्या निकलता है सबसे पहले शब्द? एब्सोल्युटली सर, दिस इज वेरी राइट क्वेश्चन। आप चूंकि आपने एनसीसी के खुद कैंडिडेट रहे, एनसीसी में कितना अनुशासन सिखाया जाता है उसी के साइमल्टेनियसली हमको आर्मी में, एयरफोर्स और नेवी में सिखाया जाता है। जहाँ तक मैं अपने डिसिप्लिन के बारे में मेरा ये मानना है कि हमें डिसिप्लिन, हमारी डिसिप्लिन थॉट होनी चाहिए, डिसिप्लिन एक्शन होनी चाहिए, हमारी डिसिप्लिन लैंग्वेज होनी चाहिए, हमारी डिसिप्लिन मूवमेंट होनी चाहिए। सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट for in every sector of our not only personal life but in national life also we need a discipline, very good exemplary discipline we need। यहाँ पर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, क्या आपको लगता है कि वो डिसिप्लिन वर्क करते हैं? They are doing their job in a accordingly in a not only good discipline but our bureaucrats, our officers are busy with pleasure. They are working their professional duty accordingly. जैसे कि अभी मोदी जी का आगमन हो या फिर योगी जी का आगमन हो, गरीब लोगों को ग्रीन पर्दे से ढक देना, गरीब लोगों की ढकेलें हटवा देना, डिसिप्लिन वर्क, अनडिसिप्लिन वर्क। क्या योगी मोदी जी जब भी विजिट करते हैं, कोई मंत्री विजिट करता है, तो क्या उन्होंने अपने बचपन में ऐसी चीजें कभी नहीं देखी? चाउमीन की ढकेल हो गई, अंडे वाले की ढकेल हो गई, या फिर गुटखा पान बीड़ी चाय वाले की खोखा हो गया, क्या उनको ऐसा नहीं देखा है? राइट। या फिर उनको ऐसा महसूस कराया जाता है कि इंडिया चंगा सी है और सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है? क्वेश्चन, बट सर बिकॉज these leaders you named, these leaders are global leaders. They are not our local leaders, including our national leader. They are very global leaders. So point of security is very important concern, sir. Achha. Because the point of security now in a hideouts, because these hawkers are there. If a hideout, anybody can misuse them. So these hurdles. So as per the high top sense of security, these steps are taken by the government. This is the state government duty and national government duty to protect our global leaders and to take care of their security concern. ठीक, आप अभी आप मुझे इतना बताइए कि रिटायरमेंट के बाद आपने एजुकेशन सेक्टर ही क्यों चुना? और देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स जिसमें आप जा सकते थे, बेहतर काम कर सकते थे, किसी में मैनेजर बन जाते, डायरेक्टर बन जाते, then why choose education? Very good question, sir. I'm very glad to receive this question from you. Sir, you know that I was already in Army Education Corps, and Army Educational Corps is related for educational activity. But I am very glad to inform you कि जब मैं आर्मी एजुकेशन को ज्वाइन किया, I was in only group B. I was only intermediate. But when I joined, I took permission from our commanding officers to complete my graduation. So I completed my graduation. Then after I completed my diploma in teaching from Pachmadi, then teaching experience I got 16 years from there I received. So my all activity were related to educational. So I choose this career to become a good educationist and to bring vibrancy in field of education in the country, and I should be a part. So I took a decision
to become a principal in the school. What is the main difference between civil school society and other schools, army schools, सैनिक schools, RIMC, उन स्कूलों में और सिविल स्कूल के स्कूलों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? बिल्कुल वो बेहतर होती है ज्यादा कि ये बेहतर ज्यादा होती है? Very correct, sir. You describe about RIMCs, you describe about Sainik schools, military schools, and other schools. Sir, there is a difference because for the purpose, our purpose is to create military leadership among the children. We have set up military schools and Sainik schools. There, the training of our officer give the training about the good leadership, how to command and control, about HRDC's Ministry of Human Resources, we teach them, the children there. So we are getting human resources, we are getting our military leadership, we are getting our physical training. There every rules and regulation for the physical fitness training also given them. So this is quite different. मिलती है और ओरिजिनल होती है? हिंदी में बताना this is because supply, this is a supply system in the armed forces, whatever they have made up their system. So maximum subsidy is given to the soldiers. अच्छा. In army, through the canteen, the subsidy is given to the soldiers as they could foster their families and their children. So subsidy is given through the canteen to the army personnel. आप एजुकेशन इंस्ट्रक्टर रहे, आप अभी प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर भी हैं. आप मुझे इतना बताइए कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की सरकार ने, इसके क्या फायदे हैं और क्या वरदान है, इसमें क्या अभिशाप है? Right, sir. So far as my knowledge is concerned, new education policy 2020, it is update form of new policy on education of 1986, amended in 1992. So new education policy 2020 has been framed by the present government only to bring the vibrancy in the country in the field of education. Because when I take care of the study of my NEP, so what I found there, it is divided in 4 parts. First part is school education, second part higher education, third part we saw implementation of policies. So at school level, a early child care and education is taken care of, and including the fundamental right, fundamental education, and that is the learning point is the center in school education. Okay. Meanwhile, in higher education, the students are developed in the form of to create a leadership education based on technology, technical education developing in the country. So this is in education or higher education, and so far as also it is also given for professional duties like adult education. Yeah. This is the higher education system in the country in new education policy 2020. Surgical strike, one word answer. Surgical strike important for us. ठीक. Army. Brave, organized, best organization in the world. Who is the best Prime Minister of India? Indira Gandhi versus Narendra Modi. Who is best? Indira Gandhi, by the founder, we can say a middle founder of the country, and Narendra Modi, we can say is a modern founder of the country. दोबारा हिंदी में बोलो इसे आप बस. मध्य युग निर्माता को हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को से दे सकते हैं. अच्छा. आधुनिक भारत के निर्माता हम माननीय नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं. Who is best? नरेंद्र मोदी. इंदिरा गांधी बेस्ट क्यों नहीं? इंदिरा गांधी, what I told you, sir, what I told you, sir, what I told you, Yeah. she also took our great Prime Minister Indira Gandhi. She is the middle founder of the country. ठीक. She took very, very good decision for the country's sake. ठीक. But in spite of the other decisions, he is our present Prime Minister taking global initiatives, ठीक. global decisions. So what, this is my personal view, sir. New education policy. One word answer. For the children. Education. Must be for all. War.
learning military leadership, and we should be ready for the protect to our country. ठीक, बीजेपी, A visionary party of the country. ठीक, आरएसएस, A cultural organization of the country. मोदी, A great person. राम मंदिर, Great achievement. हिंदू राष्ट्र, We leadership is ready to make it. राहुल गांधी, A good politician, but needs experience. ठीक है, First of all, I would like to give the message to all that we must be a man of discipline, man of thought, and disciplined thought, disciplined action, and disciplined way. Second, what I feel and what I make it question to our विकास सर. विकास सर एक राष्ट्र लेवल के जिन्होंने क्वेश्चन मुझे पूछा गए, आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव द आंसर. एक बहुत विकास सर एक मैन ऑफ सिंपलिसिटी, इज ए मैन ऑफ एग्जाम्पलरी कैरेक्टर, इज ए मैन ऑफ डिसिप्लिन्ड थॉट, डिसिप्लिन्ड एक्शन. हमारे जो माननीय विकास जी का जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और आप अपने समाज के लिए और अपने के लिए देश को तरक्की को पहचानने, देश को तरक्की पे ले जाने का कार्य करें. तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और बाकी का आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे पॉडकास्ट हम और लेके आएँ और लोगों से बात करें. किन लोगों को मुझे बुलाना चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें 1999 के युद्ध के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत सारी परिचर्चा करेंगे. तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर भी और शेयर करके भी. शेयर करके हमें अच्छा लगेगा क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और ऐसे हम एपिसोड बनाते रहेंगे. धन्यवाद.